Okay, now I'll tell you the highlights of the question. Sam Manufacturing Company, so he is a manufacturer, जिसका cost sheet बनेगा, gives following particulars for the year 2017. So fine. All this I'll discuss later. First, let me tell you how to identify an exam. It's an estimated cost sheet sum. The company has worked to its maximum capacity of 20,000 units during 2017. The management has decided to increase production capacity to 30,000 units for the year 2018, and it is estimated that, okay, so can you see this word? Estimated. Okay, so this will help you to highlight. It's a type 3 sum. Okay, then they have given you 3 pointers that I will discuss later when I'm doing the sum. Then see the last line. Prepare a statement showing total cost as well as unit cost and profit for the year 2017. Also prepare a statement showing estimated profit for 2018, taking into consideration the changes in 2018. Now, which changes have been done in 2018? These 3 changes. Yeah, 1, 2, 3. Okay. So 2018 का जो cost sheet बनेगा, वो with respect to 3 changes होगा. Am I clear to everyone? Okay. So these highlights will explain you कि it's a type 3 sum, that is estimated cost sheet sum. Okay. And nextly, now what is an estimated cost sheet? Okay. What happens is, what do you call while taking certain business decisions, I hope I'll take you back to the theory part where I had discussed cost accounting as a subject. It also helps in effective managerial decision making. The first objective of cost accounting as a subject is calculation of cost, then it is calculation of profit, then it is calculation of sales, then it is controlling cost. Okay, that is cost control and cost reduction. And the fifth one is it helps reporting to the management for better decision making. Okay, so if you have the current year cost sheet, then you can estimate your prices for future. ओके और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करंट ईयर का कॉस्ट शीट है तो ही आप नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मेरे पास जैसे दिस ईयर इज विच ईयर 2020 इज द ईयर, सो से फॉर एग्जांपल आई हैव द कॉस्ट शीट ऑफ लास्ट 6 months, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून. Okay, so I will call it as first half cost sheet. Okay, and I can estimate, matlab I can make a future cost sheet from July to December. Is that clear to everyone? So that is also the concept of estimated cost sheet. Okay, तो ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि एक year ही होना चाहिए. It can be any period. The period can be less than a year also. Okay, but just keep in mind the base period should be there with you. That's your current period. Okay, and based on the current period or the current year, you will make the estimated year or the estimated cost sheet. Am I clear to whatever I said? Just acknowledge it in the chat box. Okay, Kunal, Bhumi, Shrey, Jyoti. Fine. Okay, fine. Yeah. Thanks, dear. Thanks, everyone. Okay. So this is estimated cost sheet. Okay. अब जब estimated cost sheet का sum आएगा तो क्या करने का? ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको 2 कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, एक करंट ईयर का कॉस्ट शीट और एक नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट या एस्टिमेटेड ईयर का कॉस्ट शीट. ओके, बट ऑब्वियसली 2 कॉस्ट शीट बनाना मतलब इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इन एग्जाम यू डोंट गेट that much of time. In 30 minutes you have to complete the sum. So when we will solve the sum, I will teach you the shortcut technique. I will teach you the shortcut how to combine 2 cost sheets and save your time. ओके, सो रिमेम्बर दैट. तो हम तो 2 कॉस्ट शीट नहीं बनाएंगे, हम उसको कंबाइन कर देंगे. ओके, फाइन. नेक्स्ट, अब when I'm saying estimated cost sheet, that time do you understand there will be certain expenses जो increase या decrease होंगे क्योंकि future है ना.
अगर आज करंट ईयर में मेरा रॉ मटेरियल आई परचेज इट एट द रेट ऑफ ₹20 per kg, okay, the same supplier may increase the price next year, okay, से 2021 के लिए आई एस्टिमेट, ये तो जनरल मार्केट रूल है कि अगर आप बजट बना रहे हो या अगर आप एक एस्टिमेट्स ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज तो सोच के प्राइसिंग को एस्टिमेट करना पड़ेगा। ये तो जनरल रूल है, ये करते ही है, सब करते हैं। ओके, तो जैसे रॉ मटेरियल अभी ये साल मुझे 20 रुपए में मिल रहा है, जरूरी नहीं द सेम सप्लायर विल गिव मी द सेम रॉ मटेरियल फॉर 20 rupees in the next year. He might have a 10% increase in the raw material. So 20 rupees का 10% increase is how much? 2 rupees बढ़ जाएगा, तो मतलब next year मुझे वही raw material 22 rupees में पड़ेगा। Are you understanding? So this is called as estimates. Okay, then there may be change in the wages. Okay, today the labor is working at the rate of 200 rupees per day. 2021 में he may ask for a hike. He may say I will work at 250 rupees per day. Okay, is that clear? Okay, so these are called estimates. And there may be estimates which may not change also. जैसे सप्लायर है बहुत पुराना, मैं पिछले 10 years से उसी सप्लायर से what you called सामान खरीद रही हूँ, तो obviously he may for me because I am his what you called prolonged customer. Okay, he may not increase the rate, he may not increase the rate. Okay, so there are possibilities that the rate may not even change also, so there is no change in the expenses as well. Okay, then same applies. अभी ये जो मैंने दो examples दिए, ये तो direct cost के examples थे, right? Raw material and wages. Similarly, you can have it for indirect cost also. Okay, say my factory premises is on a rental basis. Okay, this year I am paying a rent of 50,000 per month. नेक्स्ट ईयर इट मे हैपन ऑब्वियसली, जो क्या बोलते हैं, जो लोग रेंट पे फैक्ट्री प्रेमाइसेस हायर करते हैं, जनरल रूल है हर साल 10% बढ़ता ही है, ये तो जनरल रूल है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी गुड इक्वेशन विद द लैंडलॉर्ड, ही माइट नॉट increase the rent prices. Okay, he may not even mention it in the agreement में he will make it, जो लास्ट ईयर का एग्रीमेंट है 50,000 उसी पे वो बना लेगा नेक्स्ट ईयर भी। ओके, बट दिस हैपेंस व्हेन यू हैव अ गुड रैपो विद द लैंडलॉर्ड। अदरवाइज जनरल रूल है कि 10% हाइक तो होगा, तो 50,000 का 10% इंक्रीज इज हाउ मच? 5,000. So next year you will have to pay 55,000 as your rent. Okay, similarly there can be decrease in prices also. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा prices increase ही होगा, there may be decrease in prices also. Okay, so this is the concept of making an estimated cost sheet, so that we can calculate estimated cost price, we can calculate estimated profits, we can calculate estimated selling price. Okay, so this is the crux, this is the bottom line of making an estimated cost sheet. Okay, बहुत जन करते हैं, अगर आपको पता होगा, अगर आपको ये concept पता है tenders, जैसे what do you call, अगर गवर्नमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन कर रही है, सपोज गवर्नमेंट फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबके लिए ओपन कर देती है। ओके, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ओपन कर देती है। ओके, तो क्या करते हैं, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ये लोग गवर्नमेंट को बिड्स देते हैं। ओके, तो ये बिड्स जो ये लोग करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं? कॉस्ट शीट के बेसिस पे करते हैं। ओके, सो एवरी public or private construction company prepares a cost sheet, an estimated cost sheet, क्योंकि जो फ्लाईओवर है वो एक साल में तो बनेगा नहीं, वो बनेगा अगले 5 साल में या 10 साल भी लग सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन, दे foresightedly think of the coming 5 years and the coming 10 years. Okay, so what is that? Estimated. Okay, it's an estimate you do. ओके, सो करंट, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने आज के दिन पे फ्लाईओवर का बिडिंग मांगा है, तो सारी कंपनीज क्या करेगी, अपना कॉस्ट शीट सबमिट करेगी। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करके दे विल सबमिट अ कॉस्ट शीट टू देम, और जिसका सबसे लीस्ट प्राइस होगा, जिसका कोटेशन सबसे लीस्ट होगा, वो एक्सेप्ट होगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, वेयर इज इट अप्लाइड? ओके, just acknowledge it in the chat box. Okay, fine. Thank you, students. Next. Okay,
So you have to keep certain concepts in mind. Please note that concepts and share that. Yeah, this one. Write down this. Okay. Now, before writing this, yeah, I'll have to tell you something about, understand now what I'm saying. C plus P is equal to S. बराबर, करेक्ट. ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ? कॉस्ट शीट के लिए बात कर रही हूँ. तो कॉस्ट शीट में this cost price is what? It is direct cost and indirect cost. Okay, which is further divided as direct material, direct labor, and direct expenses. Fine. Indirect cost is further divided as factory, admin overheads, selling and distribution overheads. Correct? Clear ना? Okay. But जब हम next year cost sheet बनाते हैं, जब हम next year का cost sheet बनाते हैं, तो ये जो मैंने cost sheet बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? As per the theory of CAS 1, this is called as cost classification. Cost classification on the basis of elements. I had done this in the earlier lectures. Okay. और एक और होता है cost classification on the basis of behavior. ये भी मैंने करवाया है पहले. तो उसमें क्या होता है? सेम फॉर्मूला C plus P equal to S, but उसमें ये जो C है ये होता है सिर्फ fixed cost and variable cost. Clear? Okay. तो estimated cost sheet में क्या assumption होता है कि expenses या तो fixed होते हैं या तो variable होते हैं. Understood? तो अगर वो fixed होते हैं तो क्या करने का, अगर वो variable होते हैं तो क्या करने का. Okay, it gives you a way out for that. Okay, it gives you a roadmap for it, how to prepare an estimated cost sheet. Okay, so this is the basis. They have classified expenses as variable and fixed. Okay, so I will tell you in a nutshell. मैं आपको एक easy way में याद करने के लिए बता रही हूँ. जितने भी आपके direct cost है, आपके पास कितने डायरेक्ट कॉस्ट है? 3. डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है. व्हाई? बिकॉज दे ऑल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Okay, if I'm purchasing 1 kg of raw material for 10 rupees, so for 2 kgs I will pay 20, for 3 kgs I will pay 30, and so on. And if I'm not doing any purchases of raw material, I will not pay. So it is dependent on number of output. Okay, clear? और जितने भी आपके ओवरहेड्स है वो सब बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है. क्लियर? एनी डाउट्स? Acknowledge it in the chat box. Is this clear whatever I said? Okay, so either okay, fine, thanks dear, thank you. Yeah, so now start it from the beginning. Just a minute, students. So all these sums we have done, these are all past sums. Here it comes. Okay, so now make a note of this. ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है फॉर सम सॉल्विंग. ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस. नोट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट. So if variable cost increase or decreases, if variable cost increases or decreases, or there is no change in variable cost, as I gave you the example of raw material, हो सकता है नहीं भी बढ़े, वो चेंज हो सकता है. सेम रॉ सप्लायर है, तुम्हारे अच्छे टर्म्स है सप्लायर के साथ, नहीं भी इंक्रीज करेगा वो. Okay, if variable cost increase or decreases or no change. Okay, so what will you do in the how will you solve the question? The cost per unit column will change.
See, I've written cost per unit column will increase or decrease or will remain same. I just give you an example, right? 1 kg पे 20, 2 kgs पे 1 kg पे 10, 2 kgs पे 20, 3 kgs पे 30. So what is changing? My per unit cost is changing. Okay. Similarly, if there is a decrease in raw material price or variable cost, okay, then the CPU column will decrease or will remain same. Okay. You will best understand this when we are doing sums. So आपको उसका application समझ में आएगा. Next, fixed cost. If fixed cost increase or decreases or there is no change, then the amount column will increase or decrease. Because fixed cost ka definition is what? It is paid by the manufacturer irrespective of units produced. Okay. So if I am producing 0 units, still I will have to pay the rent of my factory premises. I cannot tell the landlord, oh, I did not produce anything this month, I cannot pay you the rent. No, that's not happening. Best example is this pandemic, where 3-4 months say maximum manufacturers are not producing anything, still they have to pay the rent. If their premises is on a rental basis, they have to bear the electricity charges. You must be thinking, जब premise बंद है, plant machinery चल ही नहीं रहा है, bill कहाँ से आएगा? But a minimum bill you have to pay. Okay? अगर आपने कभी electricity bill देखा होगा, तो 0 to 500 units पे charge लगता है. तो 0 मतलब unit बंद है, तो भी bill तो आएगा ही आएगा. Okay? एक minimum bill आएगा, but आएगा जरूर. Then, if there is increase or decrease or no change in units produced, accordingly units produced will increase or decrease. Similarly, for units sold, if there is increase or decrease or no change, units sold will increase or decrease or remain same. Then selling price. अगर exam में बोला sales is increasing, then the amount column will change. Because when I say sales, it means sales value, okay, amount. And if selling price bola hai, then the cost per unit column of sales will increase or decrease. Okay, so for sales, you have to be very careful. I mean, you have to see what the question is asking you to do, instructing you to do, whether sales value or whether selling price. When I'm saying selling price, I'm talking about per unit sales. Okay, so the cost per unit column will change. And if I am talking about sales, then the amount column will increase, decrease, or will not change. Okay, Ahem, I read your message. Okay, no issues. And the last and the most important note, for estimated cost sheet, we have to assume that units produced is equal to units sold. Okay, I will explain this, but anybody wants to try this? इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड. ये अजम्पशन क्यों करना है? ऐसा अजम्पशन लेने से होता क्या है? एनीवन? एनीवन? जबकि हमने आज तक जितना भी कॉस्ट शीट का सम्स किया, कहीं भी हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट्स सोल्ड इक्वल था ही नहीं.
In fact, there was always difference in quantity. Anyone wants to try this? For estimated cost sheet, assume units produced equal to units sold. I've clearly said for estimated. So that doesn't mean for the current year cost sheet, you will assume units produced is equal to units sold. No, only for the estimated year, that is the future year. ज्योति अज्यूम करते हैं कि ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस विल बी सोल्ड. ओके, तो ज्योति इससे क्या होता है? इफ अगर हम ऐसा अजम्पशन करते हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कॉस्ट शीट में? आई एम आस्किंग दैट. इसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉस्ट शीट पे अगर ये अजम्पशन किया तो? एनीवन? ओके, चलो आई गिव इट द आंसर. फाइन. If I produce 20,000 units and if I sell 20,000 units, is there closing stock? Closing stock is nil. There is no closing stock then. पूरा जितना भी प्रोड्यूस किया पूरा का पूरा बेच दिया तो अनसोल्ड स्टॉक तो है ही नहीं आपके पास. ओके, सो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में ये अजम्पशन किया जाता है दैट देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक. ओके, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. सो आपको वो फीफो वेटेड एवरेज वो सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? बट करंट ईयर में हाँ करना पड़ेगा, बट वही चीज नेक्स्ट ईयर में जाएगी तो नहीं करना पड़ेगा. Okay, anyways, I guess these level of sums are not there in your TY BCom syllabus, but those who are doing CA, CS, CWA, वहाँ पे ये level है. Okay, but वहाँ पे ये assumption नहीं चलता है. When you are doing CA, CS, ICWA and you are doing cost sheet, तभी ये assumption वहाँ नहीं चलता. Units produced equal to units sold. Okay, because अगर हम अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ही एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो तुम सोचो ना तुम्हारा जो प्रॉफिट आएगा, जो कॉस्ट शीट से जो प्रॉफिट मिलेगा, वो कितना डिविएटेड प्रॉफिट होगा. इट विल नॉट बी अ रियल प्रॉफिट. ओके, दैट्स द रीजन. सो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं होता है यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड वाला. प्रैक्टिकल लाइफ में आप एस्टिमेटेड के लिए भी अनसोल्ड स्टॉक के बारे में सोचते हैं. ओके, बट फॉर TY BCom purpose we assume units produced is equal to units sold because those level of sums are not there for you. Is that clear to everyone? Okay, so that is why I have given this note here. Okay, is it clear? All the notes are clear, all the 6 notes are clear. Any doubts? Kindly ask, because इसके बाद मैं sums करने वाली हूँ इसलिए. Okay, तो अगर आपको ये नोट ही नहीं समझा तो सम तो बिल्कुल नहीं समझेगा. Okay, acknowledge it in the chat box. Okay, and we have last 10 minutes, so you guys can start giving your attendance as well, or simultaneously also listen to the adjustments which I'll be discussing now. Okay, obviously some we will be able to solve in the next lecture, but at least we can go for discussion, we can discuss the sum. Okay, start giving your attendance, dear. Sums we will do next lecture. So this is October 2018 का question paper. Yeah. So first is information for the year 2017. So ये आपका current year है. ठीक है, और ये जो 2018 है, ओके, ये 2017 आपका करंट ईयर है. ठीक है, पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, और ये जो 2018 है, दिस इज योर
future year or estimated year, whatever you call it, or next year भी बोल सकते हो. This is your estimated year or future year or next year. Okay, so this is what you have to search first. Next, 2017 में क्या क्या खर्चा हुआ है, ये सब खर्चा हुआ है. Okay, तो अभी उसको आइडेंटिफाई करो. So first is material. Material means obviously raw material. ठीक है, so this is my direct material. Okay, the first item in direct cost. Then direct wages, the second item in direct cost. Administrative overheads, देखो clearly बोला है fixed है. Variable लिखा है नहीं लिखा है ना, assume भी नहीं करने का. Is that clear? So admin overheads only fixed amount is there. Then sales, the last item in cost sheet. Profit is also given. And students, this is not printed. Please write here. This is factory overheads. Okay, so please make a note of it. So this is factory overheads, fixed and variable. Okay, fixed and variable दोनों दिया है. ठीक है, इसको हम सेमी वेरिएबल भी बोलते हैं. ओके, तो इस सम में फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. समझ में आ रहा है क्यों सेमी वेरिएबल? क्योंकि वो फिक्स्ड भी है और उसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है, दोनों है, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेम कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. Selling and distribution overheads is a semi-variable cost because it has a fixed element also and it has a variable element also. Whereas admin overheads in this sum is not semi-variable cost. It is purely a fixed cost. समझ में आ रहा है difference of fixed, variable and semi-variable? Acknowledge it in the chat box. Understanding fixed, variable and semi-variable. Okay, fine. Thank you, students. Next. The company has worked to its maximum capacity of 20,000 units during 2017. ये रहा. ये बता सकता है ये 20,000 units क्या है? Anyone? What does 20,000 units indicate? Okay. Anjali, Jyoti. Okay, Shrey. Okay. Production. Yeah, very good. This is my units produced. Good. Okay. तो ये है मेरा units produced. ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ. Next, the management has decided to increase production capacity to 30,000 units for the year 2018. So next year manufacturer ने सोचा है वो 30,000 units produce करेगा. अच्छी बात है, assumption है उसका, कोई बात नहीं. Current year में ही तो next year का assume करेगा. So an estimated cost sheet is purely based on assumption. Yeah, it may happen that that whatever is your estimates can go for a toss. ऊपर नीचे हो सकता है because आपने आज 12 महीने पहले से अगले 12 महीने में क्या होगा वो what do you call calculate करके रख दिया है. तो obviously there can be changes. Obviously anytime. जिन लोगों ने लास्ट ईयर कॉस्ट शीट बनाई होगी नेवर assumed coronavirus will come, correct? So obviously their estimated cost sheets must have definitely gone for a toss. Okay, so this is units produced of the next year. Okay, और ये उनके conditions है. ये 1, 2, 3. These are the conditions which you have to follow when you are making an estimated cost sheet. This one. Condition number 1, they are saying there will be future tense है ना,
all round rise in variable cost by 10%. ये ध्यान में रखना जब हम estimated cost sheet बनाएंगे. Next, there will be increase of 20% in all fixed overheads. ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे. Next, there will be no need to change the selling price for 2018. Okay, so keeping these three things in mind, we have to prepare the estimated cost sheet. Am I clear to everyone? Is the question clear? और क्वेश्चन में नहीं भी बोला है ना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने के लिए, आपको मालूम है ना ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का समय बनाना पड़ेगा. सो ओके, सो डोंट थिंक अरे क्वेश्चन में नहीं बोला है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने के लिए तो हम सिर्फ करंट ईयर बनाएंगे. नो, बाय डिफॉल्ट if you have understood it's a future cost sheet, you have to make the current year as well as the next year. Okay, clear everyone? So next lecture I'll be completing this sum, and that too with the shortcut way, obviously. Okay, now with respect to textbooks and all that, according to me you should not purchase a textbook. Not required, actually it's not required, right? Still, if you want to go for any you want to refer any book, then you should always refer some good books, like reference books. Like the best book is Dr. S.N. Maheshwari, the best author in cost accounting. I refer his books. He is the bestest. Okay, so the reference book you can get it from your library. Library का link भी है, आप उससे भी ले सकते हो. और anyways library open भी रहती है with all measures of social distancing followed. So if you have a library card, but I don't know to what extent students are allowed right now, but teachers are going with social distancing, they are maintaining, but not all, very few, those who need the textbooks and all that, I mean the reference books. These reference books are available online also, so you can even refer it from there. Okay, वैसे तो you don't need to purchase any textbook. I am there, I will be sharing all these notes. I'm using this OneNote app. So in this OneNote app I have the the leeway to have a question and an answer also together. Okay, so it will be easy for you all for reference purpose. Clear? So once the chapter is done, I will be sharing this whole chapter ka notebook to you all. Okay, when I start with the second chapter, उससे पहले ही फर्स्ट चैप्टर का ये पूरा जो नोट्स हमने जो भी क्लासरूम में डिस्कस किया है, सॉल्व किया है, आई विल बी शेयरिंग दैट आउट विद यू ऑल. Is this clear to everyone? Any doubt? Okay, so we'll meet next lecture. Fine. Okay, so I'm ending the meeting. Fine.